So for the matrix table, and we need to select this particular visual. This is the simple table, matrix table. So we are going to first compare these two. So for the comparison purpose, first we need to check the facilities which is provided by matrix table and the facilities provided by the normal table. So this is our normal table, and you can see here only one field. These are the fields. Only one field is eligible, that is values. So you can put the values here only, like sales territory. Then you can see the profit on the basis of sales territory. And if you want to see the profit on the basis of cities also, so you need to break it. What does it mean? If you can see the data, it is in the form of group by. You means all the data is calculated. If you take an example of external, so total data of external will be shown here, or total profit of external is shown here. But if you want to split this one, so what you will going to do? You have to apply city. That means the external is splitted now on the basis of city. So if you can see the visibility, it is very difficult to understand or difficult to analyze the thing if you are using a table. But this thing you can achieve by using matrix table in a very good form. So let's try on that. When you click on matrix table, you can see there are multiple fields are opened for us. That is rows, column and values. These two terms are familiar with you, that is rows and column. If I consider a Excel sheet, so this will be your rows and this will be your column. So these two things we know. But what is the meaning of values here? That we need to check. So first I want here on the row side as a sales territory. Okay. And with this one at the top here at the column, what I want to see, I want to see my data, or I want to see my profit on the basis of the years. So यहाँ मैं जाऊंगा, यहाँ पे देखिए कि एक हायरार्की प्रेजेंट है, year, quarter, month and day. So what I will do, I will bring this one to the column field. So what happened, these are the sales territories and these are the years. And if I want to see the profit on the basis of year, I can see it easily. So for that purpose, I will go to the sales table and just bring profit here. Just want to show one thing, like just take out this city. Now this is the comparison. I just want to make it little big so you can see it clearly. I will increase the font size of values. Column headers. These are the row headers. This is row headers, this is column headers. So you can increase the size of them. Right. Then
increase the size of table. uh, so I will increase the size of values. Yes, now it is visible. Now try to find out what exactly we are doing here. We are dealing with the same data, but we can see the profit on the basis of year here. And if you want to see the profit on the basis of year on the table, what you need to see and what you need to do, you need to bring the year here. Which one is better for the visibility now? First one, that is matrix table. You can easily identify, like in 2013 for the external sales territory, this is our profit. There is no profit in 2014 and 15. Can you take that visibility here? You can't identify. Same thing for the far west. There is no profit in 2014. It's not like not no profit. Maybe the data is not provided for that one. You have profit in 2013, 2015. So you can compare it. Same thing for the others. And at the end, you can see the total for the row. This is the total for the row. And this is the total for column. If you want to see what is the total profit in 2013, you can go here and you can see in 2014 this is your profit. So for me, this is the best way to see the data, right? One more thing, when you click on this table, is there anything on this one, any other facility? There is no other facility, but when you click on this one, you'll get a facility of what it is. क्या है ये किसके साइन से ये? Yes, you have a facility of drill down. So we can click on this and we can drill down. अगर आपको 2013 पे ड्रिल डाउन करना है तो आप 2013 पे क्लिक कर सकते हो. इट विल ड्रिल डाउन टू क्वार्टर. देन क्वार्टर 1 पे करना है तो वो मंथ पे ले जाएगा. मंथ पे क्लिक करोगे तो डेट पे लेके जाएगा. सो यू कैन स्प्लिट लाइक दैट. वन मोर फैसिलिटी दैट आई जस्ट वांट टू शो यू. अभी तो ये मैंने हायरार्की यहाँ लगाया था, बराबर है. अगर समझो कि मुझे और स्प्लिट करके देखना है तो मैं कैसे स्प्लिट करूंगा? जैसे मेरे पास सेल्स टेरिटरी है और इस डेटा को मैं और स्प्लिट करके देखना चाहता हूँ तो कैसे देखूंगा मैं? किस बेसिस पे देख सकता हूँ? Yes, by adding city. So I will bring city here. So can you see city anywhere? It is present here. If you open this far west, these are the cities present for that one. Okay. But one more thing I just want to let you know in this particular case. If you add city in the rows, one more facility is activated here. Columns and rows. So drill on which? आप किस पे ड्रिल करना चाहते हो? कॉलम बेस पे ड्रिल करना चाहते हो या फिर रो बेस पे ड्रिल करना चाहते हो? तो हम अभी रो बेस पे ड्रिल करना चाहते हैं. आई विल एक्टिवेट दिस वन. इफ आई सिलेक्ट दिस तो ये नेक्स्ट लेवल पे हमको लेके जाएगा. मतलब कहाँ लेके जाएगा? अभी मैंने रो बोला है. रो में क्या है हमारे पास में? राइट. तो यहाँ पे जो मेरे पास हायरार्की रखी है मैंने, उसके नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा. तो इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखिए ये आपको डायरेक्ट सिटी पे लेके गया.
ये हमारे पास जितनी सेल्स टेरिटरी थी ना, सबकी सिटीज ओपन कर दिया उसने और सबका डेटा हमको शो कर रहा है वो अभी. So I will go one step back again. Now if I select column and activated drill down, and if I click this, what will happen? So मंथ पे जाएगा. यस, मंथ के पहले क्वार्टर और क्वार्टर के बाद आएगा आपका मंथ और मंथ के बाद में आपका डे. तो इस हिसाब से वो एक एक स्टेप सीधा नीचे करके आपको लेके जाएगा. ठीक है. इवन दो यू कैन यूज दिस वन. सो जो ड्रिल डाउन की फैसिलिटीज है यहाँ पे इजीली अप्लीकेबल है. शायद ये मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चार्ट है जहाँ मैं वर्क करता हूँ और आपको भी फ्यूचर में कभी ना कभी ये चार्ट के साथ वर्क करना पड़ेगा इफ़ यू गेट अ प्रोजेक्ट ऑफ सेल्स रिटेल. अगर ऐसे प्रोजेक्ट्स पे आप काम करते हो तो डेफिनेटली यू विल एनकाउंटर्ड विथ मैट्रिक्स चार्ट. So is it useful? Okay. I want to let you know one more comparison. हमने ड्रिल डाउन पढ़ा है, करेक्ट? तो एक विजुलाइजेशन पकड़ता हूँ मैं और यहाँ पे ड्रिल डाउन में वही चीज़ करने की कोशिश करता हूँ मैं. सेल्स टेरिटरी और ये डेट हायरार्की पिक करता हूँ मैं और प्रॉफिट लेता हूँ. ओके. यहाँ से मैं इसमें से एक चीज़ गायब करता हूँ. अरे सॉर्ट हो गया. यहाँ से मैं सिटी निकाल देता हूँ. क्या ये दोनों अभी एक ही स्टेज पे है? मेरा क्वेश्चन समझ में आया क्या? देखो, मैंने यहाँ पे जो डेटा लिया है वो क्या लिया है मैंने? सेल्स टेरिटरी और ईयर, इस हिसाब से लिया है, करेक्ट? तो यहाँ पे आप देखिए कि जब सेल्स टेरिटरी और ईयर यहाँ पे लिया है मैंने, सेम सिचुएशन यहाँ पे भी है. मतलब सॉरी, सेल्स टेरिटरी वर्सेस मैंने प्रॉफिट लिया है और यहाँ पे मैंने हायरार्की क्या रखी हुई है? ईयर की. सेम यहाँ पे प्रॉफिट वर्सेस सेल्स है और जो हायरार्की मेरे पास में है वो कौन सी है? ये देखो, प्रॉफिट बाय ईयर, क्वार्टर, मंथ. ठीक है. इस सिचुएशन में आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग कहाँ पे आ रही है? मैट्रिक्स टेबल में. लेकिन फिर भी इसको प्रेफरेंस मिलता है, इसके पीछे का रीजन कोई बता सकता है? हम ड्रिल डाउन विजुअलाइजेशंस पे लगाते हैं, इसका प्रेफरेंस दिया जाता है, क्यों? दोनों के अपने अपने यूज है. देखो, आपको बहुत डिटेल में जाना है, नंबर्स में देखना है तो आप ऐसा देख सकते हो. आपको कंपैरेटिवली अगर देखना है तो आप विजुअलाइजेशन में देख सकते हो. अभी आप एट द एंड क्या कर रहे हो यहाँ पे? ये जो सेल्स टेरिटरीज है आप उनका कंपैरिजन ही कर रहे हो कि कितना प्रॉफिट हो रहा है मुझे करके. और यहाँ पे जो आप नंबर देख रहे हो, आप एग्जैक्ट नंबर्स नहीं देख पा रहे हो, यहाँ पे आपको जाके देखना पड़ रहा है इस तरीके से. तो अगर आपको क्विकली देखना है तो आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको थोड़ा रिसर्च फॉर्म में देखना है तो आप ऐसा देख सकते हो.
और ये भी होता है कि यू कैन एक्सपोर्ट दिस डेटा, CSV फाइल बोला इसने, आप इसको, मैं फिलहाल डेस्कटॉप पे रख देता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ, क्या नाम था, कुछ नाम दिया था क्या? ओके, फिर से एक्सपोर्ट कर लेते हैं। अच्छा, डेटा,